Ladies and gentlemen, starting the edition with a very special report coming in from Siachen. Now, at the frigid and inhospitable heights of the Siachen glacier, once known as the highest battlefield in the world at a height of 22,000 feet, Indian soldiers' unwavering faith in a legendary soldier as their guardian deity gives them the strength to brave all odds. The first report coming in from the Siachen base camp. As the legend goes, a soldier named Om Prakash was instrumental in single-handedly fending off an enemy attack at the Malau post in the late 1980s. While the other soldiers had been temporarily called to the rear headquarters. Who the soldier Om Prakash was and what happened to him remains a mystery. रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहुंचा है सियाचिन, जहां पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं किस तरह से यहां पे 26 जनवरी के अवसर पर जवान जो है तैनात रहते हैं 2400 घंटे। इसके साथ साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर मेरे वीजे आपको दिखा पाए, ये वो बेस कैंप है जहां से ये जवान जो हैं अलग अलग ऐसी पहाड़ियों में जाते हैं जहां आप देख सकते हो किस तरह अभी बर्फ नजर आ रही है लगातार। इसके साथ साथ आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे एक ओपी बाबा करके एक मंदिर भी है जहां पर मेरे वीजे आपको दिखा सकते हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें, ओपा बाबा मंदिर जो यहाँ पर है, 1980 में यहाँ पे एक जंग हुआ था, उसकी अगर हम बात करें, उस जंग में एक जवान इस कंपनी का था जिसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। वो जवान जब पाकिस्तान के साथ फाइट कर रहा था, युद्ध हुआ था यहाँ पे, उसकी अगर हम बात करें, उसके साथ साथ जब वो जवान जो यहाँ की अगर हम बात करें, वो जवान जो है इस मिशन में लगा था, हालांकि अभी तक उस ओपी बाबा, हालांकि जिसका पूरा नाम ओम प्रकाश बाबा है, वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर स्थापित किया गया है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी जवान यहाँ पर आता है सबसे पहले यहाँ पे ओपी बाबा पर नमन करता है। हालांकि अगर हम धर्मों की बात करें, मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू या और कोई धर्म है, पहले वो इस लोकेशन पर आते हैं, उसके बाद ऐसी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर जाते हैं। It is a firm belief of troops that Om Prakash, fondly revered as OP Baba, protects them not only from the depredation of nature but also from the enemy by forewarning them by appearing in their dreams. 1980 के दशक में ओपी बाबा, यानी जिनका पूरा नाम है बाबा ओम प्रकाश या ओम प्रकाश बाबा बोल सकते हैं, उन्होंने मालाउन पोस्ट में तैनात थे। उस समय जब दुश्मन पाकिस्तान उस पोस्ट पर हमला किया तो कमांड हेडक्वार्टर से सभी जवान को पीछे आने के लिए या पोस्ट छोड़ के आने के लिए बता दिया था, लेकिन ओपी बाबा ने पोस्ट छोड़ के नहीं आया और अपना ड्यूटी बखूबी से निभाया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। अकेला ही दुश्मन को पीछे धकेल दिया था। उसके बाद रहस्यमय तरीके से उनका शहादत हो गया। तब से उन्होंने इस सियाचिन क्षेत्र की रक्षा करते हैं, ये जवानों का मानना है। और काफ़ी सारे जवान जिनके सपने में ओपी बाबा आए हैं, कभी अगर अवलांच आता है तो उसके पहले ओपी बाबा ने किसी जवान के सपने में आके सतर्क कर देते हैं। अगर दुश्मन अटैक करते हैं तो उसके पहले भी ओपी बाबा ने जवान के सपने में आके दुश्मन के हमले के बारे में पहले से सतर्क कर देते हैं। इस लोकेशन पर हालांकि जितने भी यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं वो सबसे पहले इस लोकेशन पर आते हैं। हालांकि 26 जनवरी के अवसर की अगर हम बात करें, सबसे पहले वो यहाँ पर आए, आरती उतारी, उसके बाद सुबह सुबह जो भी ऑफिसर डिप्लॉय होता है, चाहे ऑफिसर की बात करें या किसी जवान की बात करें, सबसे पहले वो यहाँ पे रिपोर्टिंग करता है ओपी बाबा के मंदिर में, उसके बाद वो ग्लेशियर्स में जाता है। विद सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट मुबशिर हुसैन, इरावत महराज, सियाचन। Now to this report coming in from Arunachal Pradesh, where Indian Army is practicing in high altitude regions. The forces are holding
a tactical river crossing exercise, keeping themselves ready for the most difficult and dangerous times. Remember, this happens to be one of the most difficult areas where our armed forces have been operating. What are the challenges that they have essentially been facing? And remember, there is a rigorous routine that is essentially followed by every battalion that is deployed there. My colleague Anirudh gets you a sense of what goes into this kind of a tactical training, an exhaustive report that has come in from Arunachal Pradesh. This Republic Day, we are bringing you a special report from the extreme terrains of Arunachal Pradesh. We are in the extreme high altitude areas of Arunachal Pradesh, covered by dense forest and fast flowing rivers like this. These are streams that lead to the mighty Siachen, which flows as the Brahmaputra in Assam. These fast-flowing streams are very dangerous, and when you go on patrol, particularly in the high-altitude area along the LSC, it becomes very difficult to navigate through these fast-flowing streams, and that is when you use river crossing methods, because there are no bridges in the forward areas, and in order to cross the water bodies, you either cross it with the help of ropes or natural log bridges that you construct in order to cross the fast flowing streams like this. As you can see, one soldier is now crossing the log bridge that has been constructed over a water body. This is how they practice. They are now practicing in this particular location, so that when they further go up in the higher terrain, in more higher altitude areas, they don't face any difficulty. What are the major challenges that they face? To talk more on this, we have with us Major Rahul Jakar with us, who is overlooking this practice session that is on. Major Rahul, आप लोग जब यहाँ पर खास तौर पे ऐसे फास्ट फ्लोइंग जो ये रिवर है, यहाँ पर कुछ भी यदि गिर जाए तो 5-10 किलोमीटर नीचे भी मिले या ना मिले इसका भी पता नहीं, तो ऐसे वाटर बॉडीज को आप लोग कैसे क्रॉस करते हो? और ख़ास तौर पे जब पीक मानसून सीजन होता है, वाटर लेवल हमको बताया गया कि 10-15 फीट ऊपर तक चले जाते हैं, तब कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? ये जो पूरा एरिया है अपर सियांग का, ये माउंटेनियस टेरेन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं, और पहाड़ होने के कारण यहाँ पे पूरा एरिया नदी नालों से कवर है। मॉनसून में इनका लेवल यहाँ लगभग 10 से 15 मीटर और ऊपर हो जाता है। तो इनको क्रॉस करने के लिए हम इनको अपने जवानों को ट्रेनिंग देते हैं। हम रोप ब्रिजेज बनाते हैं। जिस टेरेन पे हम पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे ब्रिजेज है नहीं, रास्ता है नहीं, जंगल काट कर हम रास्ता बनाते हैं और आगे जाते हैं। तो ऐसे में जब वाटर बॉडीज बीच में आ जाते हैं तो हम दोनों तरफ रोप से दोनों बैंकों को सिक्योर करते हैं, रोप ब्रिज बनाते हैं और हम उसको क्रॉस करते हैं। जहाँ पे रोप ब्रिज पॉसिबल नहीं होता, हम पेड़ काटते हैं, लंबा पेड़ काट के लॉग ब्रिज बनाया जाता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, ये एक लॉग ब्रिज है। इस तरह से हम क्रॉस करते हैं। तो आप लोग का इक्विपमेंट्स वगैरह कैसे गियर्स आप लोग कैरी करके लेकर के जाते हैं? क्योंकि वजन बैकपैक ऑलरेडी भारी होता ही है आप लोग का, और ये रैपलिंग और क्रॉसिंग के लिए अलग से गियर्स कैरी करना पड़ता होगा। ये रिवर बॉडी क्रॉस करने के लिए हम अपने साथ रोप कैरी करते हैं, डायनामिक रोप, स्टैटिक रोप, कैरेबिनर, जूमर, गिरी, पुली, ये सब एक जवान अपने साथ कैरी करता है वाटर बॉडी क्रॉस करने के लिए। इसके अलावा हम अपने साथ बाकी माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी कैरी करते हैं, क्योंकि हमें जंगल में कई बार रॉक फेस और ऊंचे पहाड़ जो क्लिफ हैं वो भी क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो उनके लिए हम अपने साथ माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट जैसे पुली,
गिरी गिरी, झूमर और इसके साथ साथ हम अपने साथ ये सीट हार्नेस, चेस्ट हार्नेस, ये सब भी अपने साथ हम कैरी करते हैं। एक बैकपैक का यदि मैं लगभग अंदाज़ा लगाऊं, आर्म्स रहते हैं, आर्म्स का वेट करीब 6-7 किलो का होता है जब पूरा लोड होता है। उसके अलावा बैकपैक, तो पूरा वजन जो एक सोल्जर कैरी करता है वो कितना होता है? एक सोल्जर जब पेट्रोल करने जाता है, जब एक सोल्जर पेट्रोल करने जाता है तो वो सोच के जाता है तो लगभग 30 से 40 दिन तक वो जंगल में रहने के लिए तैयार रहता है। तो उसके साथ उसका पर्सनल बेडिंग, इक्विपमेंट, वेपन, टेंट्स और बाकी सारी चीज़ें, माउंटेनिंग इक्विपमेंट, ये सब मिला के एक जवान का वजन लगभग 23 से 24 केजी तक उसका बैकपैक लगभग हो जाता है। Now you can hear from Major Rahul how difficult it is for a Jawan to go on a long-range patrol, particularly in this unforgiving terrain in the upper Siang region of Arunachal Pradesh. As you can see, these are fast-flowing streams which flows very mercilessly, and particularly in the monsoon, this turns into a violent water body, and the soldiers, when they cross these water bodies, they are loaded with at least 20 to 30 kilograms of weight along with them. These are the challenges that the Indian Army bravers face for the nation to secure us, to secure the people of this republic. Reporting for Republic Media Network with video journalist Ashok, I am Anuruddha Bhakat from Tuti. Well, shifting focus now from the eastern border to the international border on the western side. Ladies and gentlemen, that area too happens to be a challenging area for our border security force. The paramilitary force has been responsible for it. Remember, that entire area has amped up its security due to the Republic Day. In fact, its troopers have been deployed at the borders with Pakistan in 4 states to keep an extra vigil. BSF troops have also been deployed at the Jammu and Kashmir border. Now, their strategic deployment ensures coverage of all types of terrain, ranging from rugged mountains to expansive plains. And also, it's important to point out that Pakistan has essentially been trying to use this very area, which is considered to be porous and, more importantly, difficult to man. And that is the reason why, ladies and gentlemen, what we have essentially seen in the last couple of months, there has been an increased attempt, especially by Pakistan, to send in terrorists from the launch pad. That is the reason why it is difficult to perhaps man the international border. Happens to be one of the most challenging areas, not only for the Indian Army, but also for the paramilitary force. Let's take a look at this report coming in from Jammu. They can track down those consignments, and that helps to foil the attempt. Now coming to that, how equipped these brave hearts are on the international border, equipped with the INSAS rifles, with the Breta ones. These are the troops of the border security force that have been deployed here, and they give enemy a befitting reply that how enemies attempt, any attempt, be it from the border security force that they face from the rangers or from the non-state actors of the Pakistan that are backed by the state, trying to mount trouble into the Indian territory, that can also be foiled. And as we move, they also keep a strict vigil on what is happening via air, because the threat remains very clear from the adversary, that the adversary wants to push weapons also into the Indian territory. And these troops of the BSF, they always remain in contact with the headquarters, that if something has happened there, they need to get the information immediately. And for the same, they have the satellite communication devices with them round the clock. This is for the real-time sharing of the information, so that if any event is occurring, that can be conveyed well in time to the headquarters, or headquarters can convey same to the troops on ground, which means any attempt be reported immediately and tackled immediately. And this continues as the nation celebrates Republic Day. Ladies and gentlemen, there was a point in time in Srinagar when Republic Day celebrations would never really take place in Lal Chowk.
But over the years, especially after the abrogation of Article 370, we've seen a different scenario at Lal Chowk, the iconic Ghanta Ghar at Lal Chowk in Srinagar, Jammu and Kashmir. This, as they hosted the spectacular live telecast of the momentous event, this groundbreaking move not only showcased the unity, diversity, as well as resilience of our great nation, but also garnered an overwhelming positive response from the enthusiastic crowd. In fact, not just from Ghantaghar, similar scenes came in from even what was once considered the hotbed of terrorism in Jammu and Kashmir. Take a look at this report filed by my colleague Zeenat. Right now we are reporting from historic Ghantaghar, and yes, no doubt it has a historical significance because this place has not only seen the protests as a stone pelting or the Pakistani flags, but now the tricolor is right there and fluttering in the air, though it's the cold winter morning and the people have just started their routine. But the important thing at present is that there is no restriction as far as the people movement is concerned, because administration has kept its promise by allowing the people to move freely, which earlier used not to be there. Now we can see the tricolor, and also the screen here has been erected so that the live streaming of the main event could be witnessed by one and all. As far as the security arrangements on ground are concerned, no doubt there is a deployment of the joint forces in Srinagar, and the peripheries and the other districts of the Kashmir Valley are guarded by the Indian Army, but there is no untoward incident. The public transport is plying on ground, which is really making a difference here in the people's life, because earlier the transport used to shut and people movement was very less, but now we are seeing the administration has really made that possible for the people. And already there had been the invitation that had come from LG Manoj Sinha asking the people to come one and all to be the part of the Republic Day parade. So that is what we are seeing on ground. No untoward incidents, stringent security arrangement, but that the public movement has not been thwarted. People are being allowed to move out. Even the public transport is working, and as far as the mobile internet services is concerned, they have not been barred. So people are connected, they can communicate, they can move freely, and the tricolor is being hoisted at most of the places, and it will unfurl also at Bakshi Stadium, which is going to be the main venue, and the parade will begin there at around 10 a.m. That is what we have been told.